Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lecture. This series is about the law of the contract. So let's start our today's lecture. Please open your books. Section number 49. Place for performance of promise where no application to be made and no place fixed for performance. When a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promisor to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place. Illustration: A undertakes to deliver 1,000 mounts of jute to B on fixed day. A must apply to B to appoint a reasonable place for the purpose of receiving it and must deliver it to him at such place. जहाँ पर प्रोमिसर की तरफ से प्रोमिसी को कोई डिलीवरी करनी हो अपने कॉन्ट्रैक्ट की और कोई प्लेस फिक्स न की गई हो तो प्रोमिसर की ड्यूटी होगी कि वो प्रोमिसी से बात करे और उससे पूछे और जो जगह प्रोमिसी मुनासिब बताए उस जगह पर प्रोमिसी को प्रोमिसर डिलीवरी दे, यानी कि डिलीवरी देने का पूछने की जिम्मेदारी प्रोमिसर की होगी. Section 50 says performance in a manner or at time prescribed or sanctioned by promisee. The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribed or sanctioned. मुआहदे की अदायगी इस वक्त इस जगह होगी जिसकी इजाज़त मऊद इलैह देगा. जिसकी के हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. A and B are mutually indebted. A and B settle an account by setting off one item against another and B pays a balance found to be due from him upon such settlement. This amount to be to a payment by A and B respectively of the sums which they owe to each other. जैसे कि इन्होंने इस मिसाल में आपस में एक सेटलमेंट बना ली. सेक्शन नंबर 51 says promisor not bound to perform unless reciprocal promisee ready and willing to perform it. बाहम मुआहदात में जब तक मऊद इलैह अपने हिस्से का वादा अदा न करे तो मऊद अदायगी की का पाबंद न होगा. Unless reciprocal promise the promisee is ready and willing to perform. When a contract consists of the reciprocal promises, यानी कि बाहम मुआहदे, एक मुआहदे के बदले में दूसरा मुआहदा. अगर किसी को reciprocal promises की समझ नहीं आती तो डेफिनेशंस में मैंने इसके ऊपर फुल फ्लैश लेक्चर दिया हुआ है, वो लेक्चर भी देख सकते हैं और अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि उस लेक्चर का लिंक इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पुट ऑन कर दूं तो आप वहां से भी देख सकते हैं. When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed. Simultaneously कहते हैं एक वक्त में दो या दो से ज़्यादा कामों का इकट्ठे करना. No promisor need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. जहाँ एक के बदले में दूसरे वादे की अदायगी करनी हो तो जब तक प्रोमिसी अपने हिस्से की वादे की अदायगी ना करे प्रोमिसर को भी वादा अदा करने की ज़रूरत नहीं है. 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. बाहम मुआहदात में वादों की अदायगियों की तरतीब. Where the order in which the reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order, and
where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires. इसका मतलब ये है कि जहां पर एक वादे के बदले में दूसरा वादा अदा करना हो, यानी कि प्रोमिसर ने प्रोमिसी के लिए एक वादा अदा करना हो, जवाब में प्रोमिसी ने प्रोमिसर के लिए वादा अदा करना हो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की सूरत में, तो वहां पर अब ये देखा जाएगा कि पहले कौन अपने वादे की अदायगी करे। इस हवाले से अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि पहले प्रोमिसर अदायगी करे या पहले प्रोमिसी अदायगी करे, तो फिर जैसा लिखा गया है वैसा ही होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया तो फिर जैसी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत होगी कि जिसको अपने हिस्से का वादा पहले अदा करना चाहिए वही करेगा। 53. Liability of party preventing event on which the contract is to take effect. When a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss which he may sustain in consequence of non-performance of the contract. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में जब एक फरीक ने दूसरे फरीक के लिए अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी को अदा करना होता है, तो जिस फरीक के हिस्से की ज़िम्मेदारी को अदा किया जाना था, वो फरीक जिसने ज़िम्मेदारी अदा करनी थी को किसी भी तरीके से रोक रहा है, या जिस इवेंट पे अपनी ज़िम्मेदारी उस फरीक ने अदा करनी थी उस इवेंट को नामुमकिन बना रहा है, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे फरीक की ऑप्शन पे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर किया जा सकता है। इलस्ट्रेशन में आप देख लें, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स that B shall execute a certain work for 1,000 rupee. B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so. A ने B के लिए एक वर्क करना था और B उस वर्क के बदले में उसको पैसे देने वाला था। अब A पैसे देने वाला था, A अपने हिस्से का पार्ट अदा करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन बी ने कॉन्ट्रैक्ट अदा करना था लेकिन ए ने कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा कर ली कि बी अपने कॉन्ट्रैक्ट को अदा न कर सका, और अब बी की ऑप्शन पे इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया जा सकता है और वो इस बात में हक बजानिब होगा कि ए से डैमेजेस भी रिकवर करे। ऐसी सूरत में ए इसको डैमेजेस अदा करेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।